So far, we were discussing our routing concepts, routing in the IC designing, and हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था अबाउट दी मेज राउटिंग. सो इसमें हम क्या करते थे, हम डिफरेंट वेव फ्रंट्स डिज़ाइन करते थे एंड अकॉर्डिंग टू दोज काइंड ऑफ वेव फ्रंट्स हम अपनी कॉस्ट डिफाइन करते थे फ्रॉम सोर्स टू टारगेट. सो लाइक फॉर एग्जांपल here we have the source और ये हमारे पास टारगेट है. So we could not direct connect it using the diagonal way of connection. तो इसमें हमने क्या करना था, हमने सो कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड करना था इन द नेबरिंग सेल्स और हमने यूनिट स्टेप में मूवमेंट करनी है, तो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो इस तरीके से अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वेव, आई मीन कनेक्शन, राइट. सो ये थोड़ी सी रिकर्सिव अप्रोच है. इसमें हम वन बाय वन डिफरेंट पाथ्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी कनेक्ट देम वन बाय वन. एंड सो जो सबसे पाथ शॉर्टेस्ट होगा उसको हम सेव कर लेंगे, बाकी सबको हम रिमूव करते जाएंगे. चले मूविंग ऑन. सो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट था about this kind of routing. So we have the details in case we have different metal layer connections, and then हमारे पास अगर तो non uniform grid layout है, for example different costs associated हैं, like shown over here. So vertical और horizontal cost में difference है, and we have the different cost of via as well. So definitely it will provide us different scenario for the connection of source and target. तो इस एग्जांपल को हमने डिटेल में देखा था लास्ट टाइम. सो मूविंग ऑन. तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का रिगार्डिंग द डिस्कशन सो फार? No, sir. Okay. चले so starting our today's discussion. सो हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल राउटिंग का, एंड वी हैव सम डिटेल्ड राउटिंग. सो ग्लोबल राउटिंग में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट बॉक्सेस में डिफाइन कर देते हैं अपनी होल चिप्स लाइक शोन ओवर हियर. सो यूजुअली हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर. We divide the whole layout area in small boxes like shown on the right side. Here we have the complete layout, and in this layout we have divided the whole area in these kind of dimensions, and we have called the resulting I mean, smaller areas. We have labeled them. We have labeled those small areas as G boxes. Okay, and then so by using this concept, we will make our global routing. Okay, so यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा concept है about the global routing. So you can see हमारे पास एक जो सोर्स है that is somewhere over here. So it's a little far from the target like shown over here. So we have to connect this source and the target, and it's traversing through a large space. So like shown on this diagram on the right side with the yellow line. So we are connecting the source and target in this way. सो ग्लोबल राउटिंग में हमने
थोड़े से डिफरेंट चैलेंजेस को देखना है। सो ग्लोबल राउटिंग में अगर आपने काम करना है, तो देयर वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजेशन, राइट। सो हमारे पास कंजेशन, सो कंजेशन जो होगी उसको हम देखेंगे इन द ग्लोबल राउटिंग। एंड ओवर हियर you can see we have a difference of the global routing and detailed routing. So detailed routing में थोड़ा सा फर्क ये है कि हम इसको, अगर आपने राउटिंग करनी है तो इसको हम पूरी डिटेल के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं विद दी, इवन दी जो मेटल लेयर है उसकी डिटेल भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, द डिटेल्ड राउटिंग। तो ग्लोबल राउटिंग में एक रफ एस्टिमेट हम पाथ का लगा लेते हैं, so that it connects two pins, like for example shown over here. So this is the perfect example for the global routing. So you can see we can connect somehow some source and the target in a roughly sketch like shown over here. लेकिन हम डिटेल राउटिंग में कंप्लीट पाथ को ट्रेवर्स करते हैं। So you can see in the zoom area over here, तो यू कैन सी हमने क्या करना होता है, हमने पूरे लेआउट को बॉक्सेस में डिवाइड करना होता है। एंड ईच बॉक्स विल हैव लेट्स से input and the output, right? So for example, this is one box over here, so this is one box, and our net will enter at this point, and it will leave the box at this point. So कंप्लीट जो ट्रेवर्सिंग पाथ है वो इसमें डिफाइन होगा इन आवर डिटेल्ड राउटिंग। ओके, सो एनीवे, सो ये हमारे पास थोड़ा फर्क आ गया, राइट, ग्लोबल राउटिंग में और डिटेल राउटिंग में। तो ग्लोबल राउटिंग में हम रफ एस्टिमेशन करते हैं ऑफ द वायर कनेक्शन फ्रॉम द सोर्स एंड द टारगेट, लेकिन डिटेल राउटिंग में हम फुल पाथ एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉम द सोर्स टू टारगेट। मूविंग ऑन, सर हमारे ये पास, बिल्कुल जी ये बताइए। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ क्यों नहीं बना इसमें? या तो ये ऑब्स्टिकल्स की वजह से ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, या फिर हाँ जी, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ शो कर दिया कि लास्ट में नहीं है कि हमारे पास स्ट्रेट पाथ ही अगर हो। कोशिश तो हमारी यही होती है कि स्ट्रेट पाथ ही हो, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल जो भी होगा वो उसी को ही फॉलो करेगा एल्गोरिदम, राइट। सो क्लियरली, सो अगर आप तो यहाँ पे देखिए, सो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन पॉसिबिलिटी। सबको नजर आ रहा है? यस सर? So, so we could connect these 2 points in a straight line, but instead थोड़ा सा detour होने के बाद फिर हमने इसको connect किया है। So it could be due to some reasons, right? So otherwise, a straight path is preferred. So sometimes it's not possible due to some, let's say, connection short पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ और यहाँ पे लेयर भी हो जिनके साथ हमारा कनेक्शन शॉर्ट हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम डिटूर कर लेते हैं, a slight detour. So I think you are getting the idea. So due to some issues, uh, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा longer path follow कर लेते हैं। Otherwise, we prefer the straight line. ओके सर। मूविंग ऑन, हमारे पास अब थोड़ा सा प्रोसेस ओरिएंटेड और सब इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सो राउटिंग इन प्रैक्टिस में हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द मेटल लेयर्स। तो लुकिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, सो यू कैन सी लेफ्ट साइड पे हमारे पास थोड़े से पुराने प्रोसेस नोड्स हैं, थोड़े से हायर प्रोसेस नोड्स हैं। सो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 130 नैनोमीटर है, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द 32 नैनोमीटर प्रोसेस। तो इन दोनों को कंपेयर अगर हम करें, तो हमारे पास 130 नैनोमीटर में जो मेटल लेयर्स हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड। सो M1 है
at the bottom M2 है, on the top of M1, and then M3, M4, M5, and M6. And one thing you will notice, each metal layer has equal thickness. For example, M1 is same like M6, so their thickness is same. We can change the width during the layout, लेकिन हम इसकी thickness को change नहीं कर सकते during the layout. On the other hand, अगर आप 45 नैनोमीटर देखें या फिर 90 नैनोमीटर देखें, so here we have M1 layer, M2 layer, M3, and M4. All of these layers share the same thickness, but on the top we have B1 and B2. So these two layers have different thickness. Of course, we can change the width and length of these metal layers during the layout, but the thickness cannot be changed. And then moving on, so हमारे पास 65 nanometer है, 45 nanometer है, and then we have the 32 nanometer. So you can see M1 से लेके M5 तक हमारे पास जो metal layers हैं, they are sharing the same thickness, right? And from B1 to B3, and from E1 to E2, and then from W1 to W2. So these metal layers have different thicknesses. So what could be the benefit of using different thicknesses in the metal layers? Um, so I think we know that. So what could be the benefit of using different um, metal with different thickness? Can सर anyone? उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगी। हाँ जी, श्योरली। अगर आपने क्लॉक को लेआउट को राउट करना है या फिर इस तरह का जो क्रिटिकल पाथ है उसको आपने राउट करना है, you can use the appropriate metal with the appropriate thickness. So definitely it will improve the signal integrity. So on the right side, we have a very interesting diagram. It's a chip micrograph, and it's showing the vertical stack of the different metal layers, right? So M1 है on the bottom, M2 है. So here we have M1, M2, M3, M4, M5, and M6. So this is how a multi-story building of the IC is created. And on the top, we have the advanced process showing us different metal stacks. So on the bottom of this diagram, we have smaller metals, M1, M2, M3, M4, for example. And as we move towards the upside, so thickness of the metals is increasing. So for example, in the middle, we can have, let's say, B1, B2, B3, and then on the top, we have, let's say, U1 and U2. So these metals will look like this uh, when we look from the side of the IC, not from the top, but from the side of the IC. Let's say this is the diagram showing us the area of the cross section of the IC, right? So ये एक थोड़ी सी पिक्चर है about the metals in the ICs. So कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का regarding these metals? नो सर। No, sir. Okay, good. So सिर्फ दो आवाजें आ रही हैं so far अभी तक, बाकी जो है are they still here? नहीं सर, इधर ही है। Yes, sir. Nice to Yes, hear sir. that. Yes, sir. Yes, sir. Good, good, good. हाँ जी, so I was thinking maybe कोई टी ब्रेक ना हो गई हो, otherwise that's okay. चले ठीक है, moving on. तो हमारे पास further कुछ slides appear होंगी which will show us the details of the routing. So for example, here we have the diagrams showing us the global routing concept. So हम क्या करते हैं, we have the concept of the boxes, right? So layout को हम divide कर देते हैं in the form of boxes called the G cells. So global cells हैं, each box, each rectangle जो होगी, each square जो होगा, so that can be called as G cell, global cell. Okay, so each global cell will have a predefined
width and length, right? So with this defined dimensions, we can have limited number of tracks within each box, within each G cell. Okay, so vertical, horizontal tracks will be there for the routing, and then we can use these kind of tracks uh, to connect source and targets, right? It's like shown over here. So we have these two nets over here, so y and x, so they can uh, traverse through all of these G cells to connect y and x. Okay, so यहाँ पे थोड़ी सी G cell की information आ गई. We have to divide our floor plan into equally sized boxes called G cells, and then हमारे पास जो routing जो होगी, it will be done using these kind of um, uh, I mean objectives. So we want minimum wire length, we want to have balanced congestion, we want to have a very good timing of the signals, and then we want to reduce the noise, and we want to reduce signal, so we want to improve the signal integrity, and we want to keep buses together. So everyone knows buses, right? So if multiple lines are used for the data, so collectively they can be called as buses. So why we have to keep buses together? So we can place them like over here, but instead अगर कोई कहता है कि I don't like this situation, so I want to have clock over here, and then okay, so so let's say I want to have a clock over here, a data line over here, and then I have, let's say, ground over here, VDD over here, and so on. So data line over here, and I mean during the layout, we have the options to design our layout in any way, but it can create problem, right? So अगर तो हमारे पास data buses जो है they are uh, in close proximity, and they are of equal wire lengths, and those kind of things can give us improved performance, right? So एक ही अगर आप multiple एक ही डाटा की अगर आप multiple bits भेज रहे हैं, so अगर तो आप उन buses को एक साथ डिजाइन करते हैं in close proximity, so chances are there they will reach the destination at equal intervals. लेकिन अगर आप उनको I mean equally spaced नहीं रखते, equally लेंथ के साथ अगर उनको डिजाइन नहीं करते, then chances are there कि एक डाटा बिट पहले पहुंच जाए, दूसरी डाटा बिट बाद में पहुंचे, so it can create problem. ठीक है, so we keep buses together. So हमने noise और signal integrity को भी देखना है. So we will see this kind of thing during the layout. And कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का up to this point? क्यों शाहरुख? No, sir. Okay, शाहरुख की आवाज नहीं आ रही. शाहरुख आज सर हूँ इधर ही हूँ सर. Okay, okay. Good. चले. Moving on, हमारे सामने एक और slide है about the routing. In this slide, you can see the concept of congestion in global routing. So EDA tool can give us information about the congestion during the global routing, as shown over here. So in over here, so over here you can see हमारे पास available connections
लिमिटेशन कितनी है, दैट इज अराउंड 20, लेकिन हमने यूज कितने कर लिए हैं, 35 कनेक्शन, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन. So EDA tool can give us this number during the simulation. Okay, moving on. So हमारे पास यहाँ पे DRC related कुछ information है. I'm sure everyone is familiar with this kind of layout problems. So like for example, on the right side, so on the right side we have different scenarios. So we have a single conductor which can carry the signal, and on the right side we have the conductor which can carry the same signal. So sometimes using two conductors instead of single conductor for the let's say important signal can solve some failures. Okay, हो सकता है so due to electromigration, due to some other phenomenon, अगर ये metal होता, अगर आप single metal use करते हैं, तो अगर आप single metal use करते हैं, हो सकता है due to some non-ideality, due to some phenomenon, it can have open circuit at some place. लेकिन अगर आप multiple wires use कर लेते हैं, connection use कर लेते हैं, hopefully our connection will not break so during the manufacturing process or due to any non-ideality. Okay, so chances of failure will decrease with the increased number of conductors. Moving on the bottom again, we have some DRC violations. On the left side, you can see in the red circle. So we have the maybe design rule violation of the spacing between two similar metals, like shown over here. So I'm sure everyone is familiar with this kind of problem in layout. So इसको हम तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं फॉर दी सिंप्लीफिकेशन. एंड देन हमारे पास एक ये सिचुएशन है, we know we have to design our layout by following the some rules. For example, horizontal connections के लिए हम different metals use करते हैं और vertical connections के लिए हम different metals use करते हैं. तो sometimes अगर तो हमने थोड़ा सा ही एरिया ट्रैवर्स करना है in the opposite direction, one way is shown over here. आप let's say horizontal आपने connection देना है, but due to some avoidance of short circuit आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा एक vertical path traverse किया है, and then you are continuing your journey in the horizontal direction. So this kind of thing can be avoided by the same metal like shown over here. So instead of using multiple conductors and connecting them through vias, अगर तो थोड़ा ही distance है, then we can follow this kind of layout style. Okay, so हम एक ही metal के साथ connect कर सकते हैं like shown over here. So instead of using two metals, so we can take a small detour and continue our same metal layer. Okay, and then हमारे पास कुछ spacing है over here. So अगर आप different metal layers को equally spaced करे हैं, so chances are there it can create problem. So small spacing definitely will be helpful in saving the area, but sometimes it can create problem. So we will see shortly. So हो सकता है कि due to process non-idealities, so due to process non-idealities, they may become short circuit.
So they can become short circuit, or these two conductors can become short circuit by the introduction of any particle or the electromigration or things like that. To avoid this kind of thing, we can increase the space between two metal layers, like shown over here. So it will improve the chances of, I mean, successful design. एंड देन हमारे पास अगर तो वियर्स हैं तो वी कैन place these kind of connections like shown over here. So we can implement vias at different lengths. लाजमी नहीं है कि हमने उनको क्लोज प्रॉक्सिटी में रखना है. So vias जो है, they can create a lot of problem in the during the manufacturing phase, let's say. So we have to design these vias very carefully. Okay, so there will be a lot of uncertainties when we implement these vias. So yes, you can place them like shown over here, or you can increase the space. So instead of using this kind of detour of the metal layer, तो आप थोड़ा सा इसको widely place कर देंगे, then it will be also a very good approach. Okay. Okay, so ये हमारे पास कुछ DRC related चीजें हैं, and then so ये हमारे पास कुछ goals हैं for the global routing, right? I mean, ये सब जो डायग्राम्स थी, those were related with the DRC violations. So हमने बाकी जो चीजें हैं उनको तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. So I think so that's nothing new. तो हमने क्रॉस कपल्ड कैपेसिटेंस जो है उसको भी रिड्यूस करना है, एंड देन हमने वायर्स को कनेक्ट करना है थ्रू द ट्रैक्स, एंड देन हमने पिंस को कनेक्ट करना है टू द वायर्स, एंड देन हमने अप्लाई करना है स्पेशल routing rules को. So what that means, so we know we have non-default rules, right? So NDRs भी हमने last time discuss किए थे. So in our vertical we can define our own rules with different metal layers, right? So those kind of rules can be applied for the designing of routing. And then so we have the information of the flow. Anyway, so यहाँ पे किसी का क्वेश्चन तो नहीं है so far? Mohammed Mirza, so do you have any question? Sir, all clear. Okay, nice. So I think आपने तो काफी layout कर लिए है. You have already applied these kind of things, so definitely it will not be an issue. Sir, all DRC clear. Okay, good. चले. So definitely हमारे पास थोड़ी सी डिटेल भी है यहाँ पे. So during the routing we can do some customization. Okay, so हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नेट्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं, उनको हम पहले डिजाइन कर सकते हैं, एंड कुछ नेट्स को हम वेट्स भी असाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल क्लॉक्स को हम ज़्यादा वेटेज देंगे, और बाकी जो हमारे पास राउटिंग नेट्स हैं उनको हम लेस वेटेज प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी कस्टमाइज्ड. एंड देन हमारे पास अगर कंजेशन है, सो वी कैन आल्सो डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग. सो ऑल्सो हम वायर को वाइड भी कर सकते हैं टू ओवरकम रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टाइमिंग कंस्ट्रेंट है, वी कैन यूज डिफरेंट
wide metal layers, right? So this kind of customization can improve our routing. Next, we have the problem of the signal integrity. So far we know some things about aggressor and the victim. So aggressor is the let's say wire uh, which is affecting the other wire. Like for example, shown over here. So we have aggressor over here and we have the victim over here. So aggressor um, will provide some noise on the signal um, at the victim wire, right? So ये हमारे पास scenario है. So we have the different transitions of the aggressor signal over here. So let's see these kind of things. So when we have this case for the aggressor during the transition, so noise will be projected, noise will be transferred to the victim wire. अगर वहां पे कोई सिग्नल है which is also moving from higher to low level, तो उस केस में क्या होगा? सो अगर तो अग्रेसर भी हायर से लो साइड पे मूव कर रहा है एट द सेम टाइम एंड विक्टिम भी हाई से लो साइड पे मूव कर रहा है एट द सेम टाइम, so what will happen? It will speed up the transition time of the victim. So how is this possible? So this downward trend will be coupled to the victim side, and instead of following the usual slope of change, so victim can have a very quick um, transition from high to low value. Okay, so this will happen when these signals are moving in the same direction on the victim line and the aggressor line. Okay, so just remember, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है अग्रेसर सिग्नल की और विक्टिम सिग्नल की, जो विक्टिम जो होगा it will be affected, it will have a transition at a very high rate. Okay, and then looking at the other situation, so when we have opposite directions of the signals, so let's say in the aggressor line we have the transition from low to high value. So in this situation, when our victim is changing from high to low, so in this situation जो victim पे जो signal होगा it will change slowly. So let's say it will have some delay, like shown over here. So aggressor was moving from low to high levels, but victim was moving from high to low levels. So aggressor जो होगा it will introduce some delay of the transition to the victim signal. So अगर तो सिग्नल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, so we will have the slow transition on the victim line. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है. सर एक सवाल था. जी बताइए. सर ऐसा भी तो कोई केस हो सकता है ना जिसमें विक्टिम के लिए यूजफुल हो ये. फॉर एग्जांपल विक्टिम वाली लाइन पे मेरे पास ट्रांजिशन डिले बहुत ज़्यादा है और मुझे उसको कम करना है, तो मैं उसी के जैसा एक और सिग्नल उसके साथ अप्लाई करूं ऊपर एग्रेसर के तौर पे, जो सेम टाइम पे ट्रांजिशन करता हो लेकिन उसका जो ट्रांजिशन है वो फास्ट हो. अच्छा, very good question, मोहम्मद मिर्जा. So I mean we have to be careful. So एक तो हमारे पास रेगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है. These are the regular components, and we know we have the transistor as a regular components, and we have the wires at the regular components. लेकिन इनके साथ कुछ हमारे पास parasitics आते हैं, like over here we have the capacitance. So these are the capacitances. These are the parasitic components. So same
is case for the MOSFETs. So we have parasitic capacitances, maybe like shown over here, right? So so problem is this, ये जो components हैं, these are the parasitic components, so ये इतने reliable नहीं हैं, and the value of these components uh, cannot be accurately, let's say, used. Okay, so let's say आपने capacitor use करना है of a value, let's say 10 picofarad, right? So आप क्या करेंगे, अगर आपको accuracy चाहिए, आप एक capacitor ही use करेंगे, maybe available from the PDK, maybe from the analog library, so you will use a capacitor. Of course, ये जो MOSFET होगा, this will give you capacitances depending on the size. You can make this capacitance look like equal to 10 picofarad, but this will not be a good reliable capacitor. और अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, मे बी लाइक फिल्टर डिज़ाइन आपने करना है जिसमें आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट करना है, या फिर एक यूजफुल फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस करना है, सो दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी can be achieved with this component, not with this parasitic component. So same is situation over here. So अगर आप चाहते हैं कि आप reliably सिग्नल को कंडीशन करें, सिग्नल को लेट्स से मेंटेन रखें, parasitic components cannot be used in that kind of approach. We will have some uncertainties, we will have some non-idealities. So accurate modeling of these kind of components uh, will be difficult. Okay, so roughly हम estimate कर सकते हैं, but surely there will be variations during the manufacturing process. So due to those kind of variations, हम इन पे rely नहीं कर सकते. Okay, sir. Got it. Okay, so I think everyone may have this kind of similar question. So we always prefer not to use the parasitic components for the designing operation. So let's say अगर हमने कोई function achieve करना है, we will never take into account we will never depend on the parasitic components. Okay. चले, moving on. Next we have the concept of multiple aggressors affecting a single victim. So let's say over here. So this is our aggressor 1 and this is our aggressor 2, and here we have our victim labeled as let C. Okay, so this is the behavior of the aggressor X, and this is the behavior of the aggressor Y. So why we have this kind of let's say transition period. So our aggressor X is moving from higher value to lower value at this time, and our aggressor is moving from higher value to low value at this time. So that means we have some window of some margin. So definitely we know we may have some known idealities, like for example we have the skew problem, we have the jitter problem. So हमने कुछ let's say margin यहाँ पे show किया है to move from some higher value to some low value. Okay, so same is shown for the aggressor Y. So we have some margin window. So during this margin window, our signal can reach from higher value to low value at any and at any time. So like for example, over here it can change, it can change over here. So yes, to
indicate some margin, we have the uh, timing. We have provided the timing window. So during these timing windows, so we have this area overlapped. चलिए अगर इसको हम दोबारा से देख लें. So these are two aggressors. और यहाँ पे ये तकरीबन ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, right? So during this interval, so they are overlapping, and they will affect the victim during this interval to a larger extent, right? So यहाँ पे so अगर हमारे पास सिग्नल चेंज हो रहा है, we have the signal transition during this overlapped interval, then we will have the maximum impact on the victim like shown over here. Okay, so ये एक छोटा सा concept है. So this is summary which I have mentioned. So noise will be coupled from aggressor to victim. In a worst case, when we have two aggressors close to the, let's say, another line like shown over here. Okay, so I think so. कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का. We can move on, right? Yes, sir. Okay. So Ajmal, should we move on? Usama. Yes, sir. Okay. उसामा की आवाज नहीं आई, अजमल की तो आ गई है. Okay, Usama I think is thinking. क्यों Usama? चले, moving on. So we have now the solutions. So previously हमने problems discuss किए हैं for the signal integrity due to crosstalk, due to some noise. So let's see some solutions. I think solutions जो है वो already and we know those kind of solutions. So one solution could be the spacing. So we can introduce some space between the closer conductors. So spacing क्या करेगी, capacitance को decrease कर देती है, so that can decrease the crosstalk, that can decrease the noise impact on the victim, right? So spacing है, so wire spreading है. So wire spreading में you can see over here. So we have two wires which are very close to each other. They can affect each other and introduce some crosstalk, introduce some noise. So due to capacitance. लेकिन अगर आप थोड़ा सा spread कर देंगे wires को, then we will have the improved signal integrity. Our capacitance will reduce and our noise will reduce due to the aggressor. सर जी सर, अगर हम इनकी जो पोलरिटीज है वो अगर हम इस तरह सेट करें कि ये जो इन एक दूसरे के जो इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते सर इस केस में? I mean, yes, we can have different solutions. I mean, so let's say तो यहाँ पे इस तरह का सिग्नल है और यहाँ पे let's say इस तरह का सिग्नल है. So ideally, I mean, some things are possible कि जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है वैसे ही एग्जैक्टली ये अगर डिक्रीज करे या फिर इस तरह की कुछ डिफरेंट सिनेरियो बन जाए. But in practical, you know, we can have skew problem first of all, and then we can have jitters, and we can have some other RC related issues, right? So those kind of things will make it difficult to
properly match the transition time exact, let's say 10.875 nanosecond अगर आप कर रहे हैं, it will become difficult to have this kind of accuracy of transitions between these two signals. तो हाँ जी, ये चीजें आप ध्यान में रखनी है कि आप हर एक को टाइटली कंट्रोल नहीं कर सकते सिग्नल्स को, तो आपने थोड़ा सा मार्जिन रखना होता है, लाइक शोन ओवर हियर. सो हाँ जी, फॉर एग्जांपल, सो लेट्स से अगर यहाँ पे प्लस वी है एंड देन वी हैव द माइनस वी, सो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा दैट कैन बी जीरो. लेकिन ये बड़ा परफेक्टली मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो हम क्या करते हैं, हम इजीली उसको अगर वाइडली यूज कर लें कंडक्टर्स को या फिर स्प्रेड कर दें, then we can have the solution very easily. Okay, and then हमारे पास ground shielding भी है. So we have the extra layer introduced between some critical paths. So वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम some ground connection provide कर देते हैं to the in between layer, और हम या फिर उसके साथ VDD को भी कनेक्ट कर सकते हैं. पॉइंट इज वी हैव टू यूज अ वेल डिफाइंड potential for the shield layer. Okay, so ये हमारे पास, you can see over here हमारे पास ये green line है, this is the green line and this is the green metal and this is the gray metal over here. So that means we are using different metal for the shielding. So should we use different metal layer for the shielding, या फिर हम same metal layer use करें for the shielding, for the isolation? So क्या ख्याल है? I mean हमारी क्लास में और कौन है? वासिफ भी तो है क्लास में. वासिफ, can you tell, should we use same metal layer for the shielding या फिर different metal layer for the shielding? वासिफ. ओके, आई थिंक वासिफ अभी सोच रहे होंगे. सो उसामा भी अभी सोच रहे हैं पुराना क्वेश्चन है, या फिर उसामा है अभी? उसामा, जी सर. ओके, नाइस टू हियर योर वॉइस. हाँ जी, तो उसामा, व्हाट डू यू थिंक, should we use same metal layer or different metal layers for the shielding? सर सेम कर लें. Of course, same will give us good solution, I mean good performance. तो अगर आप सेम मेटल लेयर को यूज करते हैं, जो शील्डिंग होगी इट विल बी बेटर. लेकिन अगर आप डिफरेंट मेटल लेयर भी यूज करते हैं, स्टिल इट विल प्रोवाइड अस सम गुड रिजल्ट्स. सो ड्यू टू सम मे बी रिक्वायरमेंट, हो सकता है आप सेम मेटल लेयर यूज ना कर सकें. So in that situation, we can use different metal. So that will be our plan B. So that should be our plan B. तो सर अगर डिफरेंट मेटल लेयर यूज करेंगे तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए ना. अभी तो हम so एडजस्टमेंट diagonal, देख रहे हैं, तो ये तो इंटरवायर बन रही है ना, साइड बाय साइड दोनों एक दूसरे के. जब ओवरलैप होंगी तो फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए. so definitely, so अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे, so वहां पे कुछ कैपेसिटेंस फॉर्म होगी, राइट. सो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें. सो मेटल वन है, दैट इज एट अनदर एक्सिस, एंड Y2 M2 जो है दैट्स अनदर एक्सिस, M3 इज एट अनदर एक्सिस, राइट. सो अगर आप शील्ड करते हैं, आई मीन अगर आप दो मेटल लेयर्स यूज करते हैं और आप उनको शील्ड करते हैं, उनको आप सेपरेट करते हैं विद द लेयर M2, so definitely it will be at some other height level and M1 is at another height level. Coming back to slide.
So let's say this is our metal 1, and let's say this is our metal 1. So they are at the same level. So they are at the same height, and they will form the capacitance. We know this thing, right? So they will have the side by side capacitance. एंड देन अगर आप दरमियान में इंसुलेशन इंक्लूड करते हैं विद सम अनदर लेयर, फिर क्या होगा? मे बी साइड बाय साइड कैपेसिटेंस तो रहे, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें मिल जाएगी. सो इन द टर्म्स ऑफ डायगोनल कैपेसिटेंस, सो डायगोनली जो नॉइस जो अपीयर होगी, सो वी नो दैट वी हैव सम फ्रिंज कैपेसिटेंस एज वेल, राइट? Fringe capacitance, everyone knows this kind of thing. Yes, sir. So definitely it will reduce some capacitance, लेकिन perfect जो solution जो हमें मिलेगा, that will be surely from the same metal shielding. Okay, so this is the point. So अगर आप different metal layer use करते हैं for the shielding, it will give us some good result, but the best solution should be अगर आप यहाँ पे सेम मेटल लेयर यूज करें फॉर द शील्डिंग. ओके Okay, sir. On the right side we have another concept. So for example हमारे पास critical nets शो किए गए हैं. So they are placed side by side, very close to each other. So they are placed side by side and very close to each other. So that can introduce some crosstalk between these two layers. To avoid this kind of thing, हमारे पास एक another path भी है, signal path भी है, which is carrying some let's say low critical kind of information. तो अगर ये जो net जो है, अगर ये जो layer जो है, अगर हम इसको critical path के दरमियान में अगर implement कर लें, then it can also solve the crosstalk to some extent, right? So same concept जो हमने यहाँ पे shielding का शो किया था, वो ही यहाँ पे भी हम implement कर सकते हैं. So so yes, and one thing more. So here we have discussed the concept of aggressor and the victim, right? So what makes this wire as the aggressor and what makes the other wire as the victim? So this can be a question. So why we have this aggressor and why we have this victim? So aggressor जो होगा, it will have some qualities. For example, अगर यहाँ पे signal fastly change हो रहा है, then it will become aggressor. So like shown over here, अगर हमारे पास transition जो है that is quick, then it will become aggressor. It is operating at higher frequency, it will become aggressor. और अगर यहाँ पे जो ड्राइवर जो है, इसके बफर्स जो है, if they are strong, then it will become aggressor, right? So they will try to maintain the signal transition over signal strength over here. So अगर तो इनकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी हायर है comparing to this buffer over here, then it will become victim. So ये कुछ qualities है for the aggressor and the victim. So same can be applied over here. So अगर आपके पास यहाँ पे जो ड्राइविंग एलिमेंट्स जो हैं इन क्रिटिकल नेट्स के, अगर वो स्ट्रॉन्गर हैं और अगर यहाँ पे सिग्नल ट्रांजिशंस भी ज्यादा हैं, then they can introduce some noise to this signal, to this non-critical signal as well. But अगर तो I mean अगर हमें इतनी accuracy नहीं चाहिए on this net, then we can implement this kind of concept. ठीक है?
एंड देन यहाँ पे ऑन द टॉप वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट. तो हम शील्डिंग भी यूज कर सकते हैं, हम स्पेसिंग यूज कर सकते हैं टू मिनिमाइज द क्रॉस टॉक. ओके, सो अगर आप जो विक्टिम का जो ड्राइवर है, अगर आप उसको इनहेंस कर लें, देन इट कैन I mean, it can improve the signal integrity of that conductor. Okay, so अगर net सर इनहेंस करने का क्या मतलब है, मतलब so उसका driving साइज? capability, yes, so driving capability आप उसकी enhance कर देंगे तो it will improve the signal integrity. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है किसी के ज़हन में? अदरवाइज वी कैन मूव ऑन. सर जब विक्टिम ड्राइवर को अपसाइज करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब जो एग्रेसर था अब वो विक्टिम बन जाए और जो विक्टिम है वो एग्रेसर बन जाए. Yes, exactly. हाँ जी, this kind of thing can happen. So, I mean, there's no clear win-win situation, but uh, I mean, we have some possibility of improving the signal integrity. Okay? So आपने ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ ज्यादा ही आपने अपसाइज नहीं कर देना, ताकि जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो आई मीन उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े. ओके सर. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो कुछ थ्योरेटिकल चीजें होती हैं एंड समटाइम्स वी हैव टू लुक डीपर कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम किसी आईसी की करते हैं तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग व्हाट विल हैपन एंड हाउ the manufacturing process will change the performance of the IC. Okay, so notebook पे अगर आप कुछ डिजाइन करते हैं, देन अगर आप उसको कंपेयर करें विद द सिमुलेशन रिजल्ट्स, प्रोबब्ली कुछ फर्क आपको नजर आ जाएगा. लेकिन अगर आप सिमुलेशन और एक्चुअल चिप के रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे, देयर विल बी अ लॉट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो डेफिनेटली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फेज की नॉन आइडियलिटीज या फिर उसकी कुछ जो लिमिटेशंस हैं उनको ज़हन में रखें, देन वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द चिप. सो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम भी शो की गई है. सो ड्यूरिंग द सिमुलेशन आपने अपना लेआउट जो था वो इस तरीके से डिजाइन किया था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर आप उसको अपने ज़हन में रखें, देन इट विल प्रोवाइड अस मोर ऑप्टिमम रिजल्ट्स, राइट? सो during simulation maybe may seem a good idea, but क्योंकि हमारे पास कुछ detour है and it can introduce some more known idealities. So so during simulation maybe it may seem a good idea, lekin definitely it will hurt the performance of the chip to larger extent. Okay, so this was the one example. We have to um, we have to see we have to apply the design for manufacturing rules on the ICs at the design level, at the designing level, right? At the simulation level. So here are some important concepts to improve the yield of the IC. We know there are a lot of imperfections, there are a lot of non-idealities. So these kind of implementations can improve the yield of the IC. So for example, we have this objective. So अगर हम VRs को reduce कर लें, then our design for manufacturing will improve, our yield will improve. लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यू विल सी कॉन्ट्राडिक्शन. सो अगर आप
extra vias include कर लेंगे, then it will improve our yield. So एक time हम कह रहे हैं via reduction, and on the next line we are saying adding more vias will improve the design, right? So depending on the situation, अगर आप vias include करते हैं to your design, it can become helpful. लेकिन अगर आप किसी और जगह पे अगर आप देखें, so probably reducing the vias will improve the performance. So like for example over here, so we have this transistor and we have this transistor over here. So source and drain and gate is shown over here. तो अगर आप एक via यूज करते हैं, definitely we have some non ideality, और जो vias जो होते हैं, they can have more problems associated with them. So for example, electromigration is higher in these kind of things. So vias जो हैं, they are more susceptible to electromigration, and जो uncertainties जो हैं वो इनकी ज़्यादा हैं. They can have a breakage of the connection between two layers. So those kind of things. So to improve the performance, so let's say to improve the failures, we should include more vias like shown over here. So as many vias as possible for the connections, for the source and the drain connection with the metal, let's say metal 1, metal 2. तो जितने ज़्यादा ये vias होंगे, उतना ही हमारा connection जो होगा, it will be reliable and it will have less resistance, right? So these kind of things will improve the performance of the, let's say, circuit. So this is the redundant via insertion. Okay, it will improve the yield of the IC. लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाली डायग्राम देखें, so you can see over here we have designed our connection like this one, और इसमें यहाँ पे let's say हमारे पास horizontal जो था that was metal 1, and then हमारे पास जो vertical जो metal था that was different, that was let's say metal 2. तो जब हम इस तरह का एक route डिजाइन करेंगे, definitely it will have more vias over here, over here, over here, over here, right? So it will have more vias, so it can create problems. So this kind of route can be improved with a straight line like shown over here. So यहाँ पे हमारे पास different vias जो थे उनको हमने remove कर दिया है, so it will be helpful for the design. It will improve the yield of the IC. Okay. सर जी. अभी जब हम डिज़ाइन रूल्स पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि इतने छोटे डिस्टेंस के लिए हम विया नहीं लगाएंगे, हम एक ही मेटल से ड्रॉ कर देंगे. हाँ जी. तो फिर यहाँ पे 4 वियास क्यों आएंगे? So this is the bad example. So this is the good example. So यहाँ पे हमने एक ही मेटल यूज किया है, और यहाँ पे हमने ऊपर जो है वो हमने लेट्स से डिफरेंट मेटल यूज किए थे फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल राउटिंग. तो जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंट मेटल यूज करेंगे, आपके नंबर ऑफ वियास बढ़ जाएंगे, which can create some let's say low yield. तो इसकी बजाय अगर आप स्ट्रेट वायर ही यूज करने सिंगल, इट विल इम्प्रूव द yield, और वहां पे हमारे पास वियास भी यूज नहीं होंगे. सो दिस इज द मेन पॉइंट. बट सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने जो पहले भी डिज़ाइन किया था वो ऑप्टिमाइज्ड ही किया था ना, मतलब हमने अगर उसको बेंड किया इसका मतलब था कि वहाँ पे कोई और चीज़ थी जब भी हमने उसको बेंड किया था.
जी अब उस वाले डिज़ाइन में और डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से चेंज आएगा अगर हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ डिज़ाइन था तो? हाँ जी, फिर आप उसको कहते हैं ना कि गियर अप करेंगे फॉर दी फर्दर इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आप फर्दर उस पर थोड़ा और एम्फेसिस देंगे कि ये बजाय डिटूर करने के हम एक स्ट्रेट पाथ ही कोशिश करें यहाँ पे आ जाए। सो हाँ जी, सो ये हमने देखना है। अगर तो डिटूर जो है इस तरह का जो आई मीन कनेक्शन है, लेट्स से जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ज़्यादा है, देन वी कैन गिव अप, लेकिन अगर स्लाइट सी मॉडिफिकेशन और मे बी थोड़े से ज़्यादा गौर फिक्र के बाद अगर कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकल आए, देन वी विल प्रेफर द स्ट्रेट लाइन। ओके सर। हाँ जी, सो आई मीन so while straightening hair and while spreading hair, so these kind of things are also uh, like this one. So while straightening means हमने small detour नहीं करने, like shown on the right side of the diagram. And so while spreading हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो everyone knows while spreading, right? So हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस जो है वायर्स के दरमियान में वो थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना है। So wire spreading and wire straightening, so these are different things. So wire straightening में हमने straight wire यूज करनी है। Our maximum priority should be to use straight metal connections instead of small detours. तो यहाँ पे जो डायग्राम थी, मे बी आपको लगे कि ये स्मॉल detours हैं which can be improved, but sometimes it may not be possible to reduce this kind of connection routing. Okay, so or maybe scale कुछ यहाँ पे बड़ा है, so अगर आप zoom in करके देखेंगे, definitely it will not be a small jog, it will not be a small detour, it will be a much larger path. हाँ जी, समझ आ रही है सबको क्यों उसामा? तो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice to hear that. Okay, तो और कोई किसी के जहन में क्वेश्चन तो नहीं है? So everyone is 100% sure the meaning of wire spreading, wire straightening, via सर जी reduction. जी जॉर्ज। सर ये जो नीचे बॉटम राइट पे फिगर है ये क्या शो कर रही है, एसिमेट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, ये वाला क्या सीन है? आई मीन एक तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स जो लगे हुए हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सोर्स एंड ड्रेन है सेपरेटेड बाय द गेट टर्मिनल, राइट? तो दिस इज ट्रांजिस्टर। सो एक आपने विया यहाँ पे लगाया है, एक विया आपने यहाँ लगाया है। सो अगर आप एक ही लाइन में विया लगा लेंगे, इट विल बी more manufacturing friendly, right? तो बजाय इसके कि आप different let's say space के साथ vias connect करें to different connections, so it can create some problem during the manufacturing process. अगर आप vias को एक ही लाइन में रखेंगे, एक ही एक्सिस में रखेंगे, it will be more let's say fabrication friendly thing. Okay, it will be more manufacturing friendly thing. अगर आप उनको एक ही लाइन, एक
ही लाइन में रखेंगे, एक ही एक्सिस में रखेंगे. सो इट कैन बी अ बैड एग्जांपल कि एक विया आप कहीं और रखें, एक विया आप कहीं और रखें. सो इट कैन क्रिएट सम आई मीन problems during the manufacturing. ठीक है सर, थैंक यू. Okay, moving on. तो हमारे पास again VRs की information है. So we are designing for manufacturing. So DFM is over here. Okay, so you can see the diagram over here on the right side, and this diagram is improved with this kind of implementation. So here you can see, अगर आपने move करना है from one metal layer to another metal layer, and you have to provide the connection to these two layers, so preferably आपने एक VR use नहीं करना. तो आपने multiple VRs use करने हैं for this proper connection. So during manufacturing, it will improve the reliability and it will improve the uncertainties of the disconnection or other kind of things. So I think आप सबने ऐसे ही layout अभी तक design किए हैं. So you are connecting different layers with multiple VRs, right? Yes, sir. हाँ जी. So it Yes, will sir. improve the reliability of the chip. So during simulation, maybe आपको कुछ benefit नजर ना आए. DRC clear है, everything is clear with a single VR. लेकिन अगर आप मल्टीपल वीआर यूज करते हैं, सो यू नो आपकी चिप काफी अनसर्टेनिटी से बच जाएगी. So it will be more reliable. Your IC will have more. Your IC design will have more yield and less chances of failure. Because let's say अगर यहाँ पे जो विया है, अगर ये ब्रेक भी हो जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये प्रॉपरली डिजाइन नहीं होता, अदर वियास जो है दे कैन सपोर्ट द कनेक्शन बिटवीन मेटल 1 एंड मेटल 2. सो आवर कनेक्शन विल नॉट ब्रेक. लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन जो है, अगर आप थाउजेंड्स आईसी बनाते हैं, प्रोबेबली some of ICs will have this failure of this connection. M1 and M2 will not be properly connected. So during the manufacturing non-idealities, it's possible कि ये आपका VR fail हो जाए, then your chip will fail. We cannot, let's say, afford that kind of failure. Okay, so same thing is shown over here. हमारे यहाँ पे जो connection है metal 1 और metal 2 के, they are also done using different VRs. So this kind of thing is labeled as, it's called as multi-cut VRs. Okay? So we have to prefer multi-cut VR instead of single VR for the case of design for manufacturing. Of course, it will have the benefit of low resistance, but ये जो factor है design for manufacturing और high yield का, it will suggest the multiple cut VRs. Moving on, next we have the again concept of DFM, design for manufacturing. So over here we have the wire spreading issue. So during simulation, अगर आप layout बनाते हैं, so you can place the conductors, you can place the metal wires following the design rules, right? So आपने multiple metal one, let's say, connect कर दिए हैं, and your simulation runs perfectly and smoothly without showing any error, right? लेकिन इस तरह की क्लोज प्रॉक्सिटी में जो प्लेसमेंट है ऑफ द राउटिंग चैनल्स, इट कैन बी अ प्रॉब्लम. ओके, सो फॉर एग्जांपल, सो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर कोई पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो जाता है इन आवर
chip. So during manufacturing अगर कोई particle by some error introduce हो जाता है, which can happen, तो जो close proximity में जो conductors होंगे, they will be affected with this unwanted particle. So what will happen? Either it will cause short circuits, or it may cause the open circuits of the wires. Okay, so both of these kind of things are undesirable. So हमने क्या करना है to improve the yield? We have to introduce proper spacing. So we have to be careful of the non-idealities. One of them, which is the addition of some particle. So अगर कोई particle, let's say chip पे introduce हो भी जाता है during manufacturing, तो हमारा minimum loss हो. So that will be a good design. ठीक है? तो यहाँ पे different examples show की गई हैं with different metal layers. So sometimes particle जो होगा, it can break the connections, or it can short the metal wires. So depending on the requirement, it can be a problem. Moving on, so we have now some concepts of the instructions. So right, we are using Innovus, and here we have some set of rules, set of instructions to use to implement this kind of routing. Okay, so we are familiar with this kind of instructions, right? So again, so detailed routing जो है, so it can be implemented with this kind of instruction. So let's say here we have set DB, so route design with timing driven true हमने कर दिया. So route हमने डिजाइन किया है with timing performance. Okay, इसको हमने true कर दिया है, and then हमने next instruction जो दी है, that will be to route design with signal integrity. उसको भी हमने true किया है. So now we are so we are using the routing design for the concurrent time driven and signal integrity routing. Okay, so both जो चीजें हैं, signal integrity और timing constraint, उन दोनों को ही consider करेगा ये tool during this kind of simulation, and then we will route our design, and then we can include more details. So with these kind of instructions, so we can have wire optimization. So we can have multi-cut vias in our design with maximum efforts, with maximum possible multi-cut vias, and then so there are some other things. So यहाँ पे हमने टाइमिंग ड्रिवन राउटिंग को थोड़ा सा इग्नोर किया है. सो यहाँ पे हमारी प्रेफरेंस जो होगी, सो दैट विल बी नॉट टाइमिंग कंस्ट्रेंट. सो एंड देन हमारे पास हमने राउट डिजाइन किया है फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एंड देन हमने टाइमिंग ड्रिवन राउट को अनेबल किया है, एंड देन हमने फर्दर उसमें सेटअप और होल्ड जो टाइमिंग है उसको भी प्रॉपरली मैनेज किया है इन आवर राउटिंग. सो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है विच कैन बी यूजफुल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द राउटिंग. Moving on, we have few more instructions. So here we have instructions for the multi-cut vias. So
So we know we can increase the efforts of the multi-cut VRs. Um, we can increase the usage of multi-cut VRs with this kind of keyword, and same is shown over here. And then हमने so we have used these kind of instructions. So after routing, we can check our results with these kind of instructions. Um, and I think it will be best to utilize these instructions during the, let's say, experimentation. So during the, I mean, during the design of the actual layout. So अगर आप कोई भी डिजाइन करते हैं, you can implement and check the reports of your let's say design, layout design. Okay. And then हमारे पास एक और concept भी है. So engineering change out order भी है. So that can be helpful. Anyway, so these were few instructions for your Innovus, and so with this kind of information, so we have reached our final slide over here. So यहाँ पे एक और रिस्क प्रोसेसर की आईसी शो की गई है. So here we have the Sun microsystem IC, so shown over here. So you can see it's a very a functional rich IC connecting to the outside world with so many connections, right? So here we have this chip, and so this chip made the Sun company a very rich company. So there's before the chip, they were having very small amount of, let's say, a profit per year. But after this, I see you can see almost a doubling of their profit. And so these kind of computers were using this kind of CPU. Okay, so this was introduced in 1987, a long time ago, and definitely we have more advanced systems now. And सर एक सवाल था. जी सर जब तक GUI इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो आईसी डिजाइनिंग किस तरह होती होगी उस वक्त? हाँ जी, सो आई मीन हमारे पास कुछ पुरानी डायग्राम्स भी हैं जिसमें वो फ्लोर के ऊपर रख के चार्ट्स रख के उस पे वो मैनुअली ड्रॉ करते थे लेआउट. सो फ्लोर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से ही आया है, यू नो, नेम जो है फ्लोर प्लानिंग. सो पुराना वर्ड है. सो पहले आई मीन टेबल भी छोटे होते थे और फ्लोर पे ही वो पूरे अपने चार्ट्स रख के उसको डिजाइन किया करते थे. सो हाँ जी. So yes, before the advent of these kind of CPUs, still we were making ICs, and those ICs were made manually without the help of, I mean, these kind of EDA tools. ओके सर. हाँ जी, आप अगर आप शुरू की स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको एक दो तस्वीरें नजर आएंगी काफी पुरानी. नहीं सर, वो वाला तो मुझे याद है. मैं इसके दरमियान वाले एरा की बात कर रहा हूँ, जब डॉस वगैरह था, कंप्यूटर्स थे, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था. हाँ जी, बट स्टिल अगर ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, सो मैथमेटिकली कुछ हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ड्राइंग के लिए हमें आई मीन वही पेन और कलरफुल मार्कर्स की जरूरत ही पड़ती थी. ओके सर.
Okay, I think we can stop here. We can start our next topic in our next class.